So welcome back to Mathematics by Romina, and in this video today we are going to study about your part 6th of integrals. Yes बेटा, so first of all part 1 to 5 देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So please जिसने भी वो नहीं देखे हैं प्लीज़ गो एंड कवर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड फिर आकर आप प्लीज़ पार्ट 6 को देखना तो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा, वरना वो क्लियर ही नहीं हो पाएगा. ओके, नाउ what all are we going to have in this part 6 basically? So in this exercise we are basically going to study about integration by parts. So we have a specific formula for that. Let's understand something about that formula. Look beta, जैसे कि आपको पता है, just let me attach one sheet. I just forget to do that. So yes, जैसे कि आप देख सकते हैं, we have one formula in derivatives, that is product rule. अब ऐसा प्रोडक्ट रूल हमारे पास इंटीग्रेशन में नहीं होता है, बट येस देर इज़ अ फॉर्मूला बाय विच वी कैन सॉल्व टू फंक्शंस विच आर देयर टुगेदर इन वन इंटीग्रल. सो इफ आई जस्ट वांट आई कैन जस्ट राइट इंटीग्रल ऑफ u इंटू v dv dx, sorry. So that would be, now there is a specific formula for that. How to learn it, just start seeing that over here. So that would be u as it is integral of v minus integration sign derivative of u integral of v dx, and फिर इस पूरे का क्या होगा, डेरिवेटिव दोबारा होगा, बिकॉज यहाँ पे एक इंटीग्रल था बाहर भी. So this is a formula, that is first as it is integration of second minus integration derivative of the first integration of second and then whole integration. So that means you also have to see कि u कौन सा होगा और v कौन सा होगा. That means first कौन सा होगा, second कौन सा होगा. Now how to analyze that? That we can easily obtain by using I late, where I represent inverse, that is inverse trigonometry functions. L represent log, A represents algebra, T represents trigonometry, and E represents exponents. और आपको कुछ नहीं करना है. फॉर लेटिंग फर्स्ट आप यहाँ से यहाँ तक बस मूव करेंगे. जो पहले आएगा वो आपका फर्स्ट और जो बाद में आएगा वो आपका सेकेंड बन जाएगा. दैट्स इट. नाउ लेट्स ट्राई एंड सॉल्व योर फर्स्ट पार्ट, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x tan इनवर्स ऑफ x dx. कैसे करेंगे बेटा? देखो tan इनवर्स क्या है, इट्स अ इनवर्स फंक्शन. सो सिंस ये मेरा फर्स्ट होगा और x क्या है, अलजेब्रा है, तो ये सेकेंड. ठीक है ना, इनवर्स फंक्शन को मैंने फर्स्ट ले लिया, अलजेब्रा था इसलिए मैंने इसको सेकेंड ले लिया. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. So it was first as it is, that is tan inverse x as it is, integration of x. So क्या होगा, x square upon 2 minus integration sign. Now tan inverse का derivative, that is 1 upon 1 plus x square, integration of x dx, और फिर इस पूरे का ही क्या होगा, इंटीग्रल होगा. So I can just rewrite x square tan inverse x upon 2 minus integral 1 over 1 plus x square into x square, and 1 by 2 will go outside the integral sign dx. Now let's see how we are going to simplify this. So x square tan inverse x upon 2 minus 1 by 2 integration sign x square. If I want, can I just add and subtract 1 over there? Just plus 1 minus 1. If I'm writing minus 1 separately, so it has to be with the same denominator. So just see, this and this got cancelled out, it got 1. So now we have x square tan inverse x upon 2 minus half, and then we can just do the integration of 1, that would be your x minus, इसका इंटीग्रल क्या होगा, it is simple your tan inverse x plus c. Now you can just multiply your half inside the bracket and that is going to give you the final answer. मैंने स्टार्टिंग में ही काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिया है, सिंस इट इज़ जस्ट वन शॉर्ट प्ले लिस्ट. सो आई डोंट वांट कि मैं बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन भी ले लूँ जो आप लोग कहे कि अरे ये तो हलवा सा क्वेश्चन है. सो इन द स्टार्टिंग ओनली आई हैव टेकन अ क्वेश्चन जिसका लेवल थोड़ा अच्छा है. सो प्लीज़ इनको प्रैक्टिस करना और अपने आप से जितना हो सके अपने आप से करना एक बार, ताकि यू कैन ऑल्सो सी कि कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप लोगों के. Let's move towards the next question now. It is integral ex sin 2x dx. Again first कौन सा, second कौन सा, पहले वो एनालाइज करेंगे. So just see बेटा, इसके अंदर if I see trigonometry और algebra, अच्छा एक्सपोनेंट्स है, एक ट्रिगो है. सो ट्रिगो यहाँ पे पहले आया, एक्सपोनेंट्स बाद में आता है. सो ट्रिगो वाला फर्स्ट हो जाएगा
और एक्सपोनेंट वाला सेकेंड हो जाएगा. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था यहाँ पर. So now let's try and integrate this by using integration by parts. So that would be your, now first as it is, that is sin 2x as it is, integral of ex is directly your ex minus integration derivative of sin 2x. So sin का क्या होगा डेरिवेटिव, that is cos 2x, और cos 2x का अलग से डेरिवेटिव करेंगे by using the chain rule, that is 2 into, now you have ex also. So integral of ex is ex dx. ये आ गया. Now just look, इसको ना पहले ही I let करके रखना. So I would be equals to sin 2x into ex minus 2 को बाहर ले लो, क्या बचेगा बेटा, cos 2x ex. दोबारा अप्लाई करो I let. Yes, you have to apply it multiple times over here. Again ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकेंड रहेगा. So देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा, फर्स्ट as it is integration of second, that is ex minus integration sign, now derivative of cos 2x, so that is minus, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आएगा sin 2x into 2, करेक्ट, एंड इंटीग्रल ऑफ सेकेंड इज ex dx. अब एक चीज़ यहाँ से बहुत अच्छे से मैच करो, अगर मैं इस 2 को आउटसाइड द इंटीग्रल ले लूँ तो यहाँ पे sin 2x डॉट ex बन गया है एंड विच वॉज एग्जैक्टली सेम एज योर आई पार्ट. सो इस 2 को मैंने यहाँ से हटाकर यहाँ पर लिख दिया एंड दिस फुल पार्ट इज सिमिलर एज योर आई. सो जस्ट रिप्लेस इट, दैट्स इट. सो नाउ क्लियर होगा कि हम लोग कैसे मल्टीपल टाइम्स भी अपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सिंपली लगा सकते हैं. इट्स नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड, बट हाँ, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सो दैट यू मस्ट बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट. सो माइनस, इट वुड बी योर -4 एंड दिस वुड बी योर आई. Just take that I over here. So I plus 4i, that would be 5i is equals to sin 2x dot ex minus 2 cos 2x ex, and your final answer I would be equals to 1 upon 5 into sin 2x dot ex minus 2 cos 2x, product rule, product में ex and plus c. So that's it. This whole was explaining the explanation for the integration by parts. Now there is one more exercise that we have to look on, and that is your one simple formula which says me integration of ex dot fx plus f dash x. तो इसका कैसे होगा बेटा, the formula for this is your simple ex fx plus c. That means अगर मेरे पास कुछ भी आए, इंटीग्रेशन ऑफ ex, एफ एक्स नॉर्मल फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव भी प्लस में गिवन हो, तो क्या लिख सकते हैं मैं इसको, आई कैन सिमिलरली राइट, आई कैन जस्ट राइट दैट इंटीग्रल एज ई एक्स एफ एक्स प्लस सी. सो ना इसको देखो, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं कर सकते हम ऐसा, बिकॉज ऑब्वियसली डेरिवेटिव कॉट है यहाँ पर और यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं. इट्स नॉट पॉसिबल. सो दैट मीन्स वी हैव टू सिंप्लीफाई इट फर्दर ऑन. सो कैन आई डू वन थिंग, सो कैन आई जस्ट लेट माई कॉट इनवर्स एक्स बी इक्वल्स टू योर टी. मैंने क्यों किया ऐसा, बिकॉज इन द डिनोमिनेटर आई कैन जस्ट सी ओवर हेयर एज 1 plus x square. So now let's start with the derivative first of all. So the derivative part would be minus 1 upon 1 plus x square dx is equals to dt, correct? So it would be 1 upon 1 plus x square dx, that is equals to minus dt. Now just put everything over here. So e, ये पूरा t बन गया था, so t, leave it as it is right now, 1 minus. Now what is this x? X can be written as cot t, so just write that, cot t minus cot square t. And now beta dt and 1 plus x square becomes your minus dt. So now just see over here, e की power t. Now beta what is 1 minus cot square t? That is your cosecant square t, correct? So you can just write over here as cosecant square t minus cot t minus dt. Just take this minus sign inside the bracket, so you will observe from here that you will get something like this, cot t minus cosecant square t dt. Now we all know that this cot t is basically your fx and this cosecant square t is your f dash x. So that means what will be the answer for this integral? The answer would be e की power t cot t plus c,
And yes, that is going to be your answer, but just replace your t over here. So that would be e की power t cot, and this t is going to be replaced by your cot inverse x. So cot inverse x plus c. So that would be your e, and just replace this t as well. Cot inverse x, this would be x plus c, and that is going to be your final answer. I hope that this concept must be clear. So basically in this small video I have covered your 2 exercises, and I have taken both the questions which were a difficult level question, and believe me, this all were the previous year questions that was somehow there in your previous year CBSE board examinations. So please go through this video, go through this question, try to do it yourself and just see that whether the concept is clear or not. Thank you so much class. Just like and subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye.